students, what's the next question from this particular topic, sound? Next question is what is the common properties of all waves? Okay, so there are four properties of all waves. So let me draw the diagram. डायग्राम से हमें पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टीज कैसे थियोरेटिकली तो कोई भी बोल सकता है. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम से यू विल गेट डेफिनेटली कॉन्फिडेंस. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. So students, as I told you, this is what y-axis, sorry, x-axis, this is what y-axis. Okay, चलो, let me draw the diagram. डायग्राम से हमें पता चलेगा कि वेव की प्रॉपर्टी. तो पहले वेव हम लोग देखते हैं. दिस इज वर्टिकल वेव. ओके, like this wave is what traveling. This is called, this is direction of wave. Okay? Direction of wave. Wave इस तरह से डायरेक्शन हो रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, we observe that wave is what originating from this point. Okay, what you observe, wave travels and reaches at this particular point. This is what highest point. Then it reaches at this point. This is called lowest peak. This is called highest peak. एकदम सबसे बड़ा highest peak. Okay, and this is called lowest peak. Lowest peak. Okay, highest peak का जो form है इसको बोलते हैं crest. That you know that. This particular thing is called crest. Okay, and this particular part is called trough. ठीक. So students, in any wave, whenever there is a wave is traveling from one point to another point, there is always be a highest peak. Highest peak का मतलब क्या होता है? ये जो wave, ये जो particle up and down किया ना, तो up करते समय maximum up गया, and then what maximum down आ गया. Maximum up, maximum down. Okay, so such maximum and lowest minimum displacement of a particle is called amplitude. तो मैं बोलना चाहता हूँ यहां से लेके मतलब this bottom, that is the mean position से लेके highest तक, this is called amplitude A. तो what is symbol of amplitude? Capital A. और इसको भी बोलेंगे A, but this is what at the lowest peak. ये होगा minus A. तो highest and lowest disturbances of that particle from its mean position is called amplitude. The amplitude of a wave motion is the largest displacement of a particle of the medium through which the wave is what propagating. And since it is a displacement, so what is unit of displacement, students? Meter. So if I say SI में हमें मीटर लिखना है और CGS में हमें लिखना है सेंटीमीटर. Okay, so when I say about amplitude, you have to write down such definition. Draw the diagram and write down the definition. So what is the second property? Second property is called wavelength. Wavelength, नाम itself इसका सिंबल होता है लैम्बडा. इसको प्रोनाउंस आपको पता है क्या करते हैं, लैम्बडा. ओके, लैम्बडा. तो स्टूडेंट्स, wavelength, नाम itself, name itself indicates what? Length of the wave. Length of the wave. तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कंप्लीट यहाँ पे हो रही है, मतलब वी विल से दिस इज 180 डिग्री एंड 180 डिग्री, 360 डिग्री. ओके, मतलब लेंथ ऑफ वन साइकिल, लेंथ ऑफ वन साइकिल, एक पूरा साइकिल जब होता है उसी लेंथ को हम लोग बोलेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक, दिस पॉइंट तक, उसको बोलेंगे वेवलेंथ. तो लेंथ ऑफ वन वेव. ओके, और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पोजीशन. अभी ये मैंने डेफिनेशन कुछ अलग लिखा है और आपको बोल रहा हूं अलग. तो अगर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सपोज ए पॉइंट है यहाँ पे. ओके, वी विल से दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस वन, दिस पॉइंट इज व्हाट ए. अभी ए पॉइंट वापस कब आएगा? जब ये वेव यहां से लेके यहां तक आएगी. तो मैं बोलूंगा दिस इज व्हाट बी पॉइंट. द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ. अनदर डेफिनेशन इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स. वो सक्सेसिव पॉइंट कौन से? बोथ आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. आई हैव रिटन बोथ आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या? देखो, ए पॉइंट कैसे मिल रहा है? जब वेव ऊपर जा रही है तब. और बी पॉइंट भी कब मिल रहा है? जब वेव ऊपर जा रही है तब. आई कैन से दिस पॉइंट इज आल्सो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. नो, दे आर इन द सेम वेव but they are not in same state of vibration. Why? Because C point में जब वेव क्या कर रही है? नीचे जा रही है. तो C is not the successive point. What is the successive point?
successive point is what? B. That's why B is called same state of vibration. A के बाद C आता है at the same displacement, but C is not a same state of vibration. Why? Because C point ऐसा है कि जब वेव नीचे जा रही है, ओके, A पॉइंट ऐसा है जब वेव ऊपर जा रही है, तो सेकंड पॉइंट कब आएगा? B. B is the next successive point where you will observe wave is what? Going up. So such points are called successive points which are in a same state of vibration. So what is the definition of wavelength? Wavelength is the distance between two successive particles. Success तो C भी था, but C is not in the same state of vibration. तो इसलिए definition कब complete होगी? Wavelength is the distance between two successive particles, but those particles or those points are in the same state of vibration. That is very important point. If you don't write in the same state of vibration, you will lose your marks. Okay? So students, what is the SI unit? SI unit of wavelength is what? Meter. CGS unit is what? Centimeter. That you know. Because length का unit तो meter centimeter ही होता है. Next point, next property, period. What is period? Students, एक चीज याद रखना, कोई भी पार्टिकल कंप्लीट करता है एक साइकिल, और जो साइकिल कंप्लीट करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट वेवलेंथ, एक साइकिल कंप्लीट किया, अब ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ टाइम लगेगा, तो व्हाट इज द टाइम? दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियड. तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, time required to complete one oscillation, time required to complete one vibration. Okay, so time required to complete one vibration by the particle of the medium is called period. एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड. टाइम है, यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड्स. देन लास्ट, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी is a reciprocal of period. ये याद रखना. I will just give the relation, but let me complete a frequency का formula. Sorry, frequency का definition. Frequency का मतलब क्या होता है? अभी ये एक वेव कंप्लीट कर रही है कितने टाइम में? T. ऐसे इतने सारे वेव्स कंप्लीट करेंगे in 1 second. देखो, number of vibration, number of oscillation completed in 1 second. Such number of vibration is called frequency. So what is frequency? Frequency of a wave is the number of vibrations performed by the particle during each second. एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं? एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं? एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं? ओके, तो व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज. हर्ट्ज का सेकंड फॉर्म याद रखना, साइकिल्स पर सेकंड. साइकिल्स पर सेकंड याद रखना, per second. Okay, and what is the relation between period and frequency? Period is always 1 upon frequency. याद रखना, period is always reciprocal of frequency. Okay, sometimes frequency का what is the unit? What is the symbol? कभी कभी f use करते frequency के लिए. They can use f, they can use n also. Okay, तो most of the time हम लोग f ही use करेंगे. ठीक है? Hope so you understood all properties. Please copy.